हे फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे इस यूट्यूब चैनल मिकी क्राफ्टर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे बनाया है चूड़ी बॉक्स, या आप इसे कह सकते हैं चूड़ीदानी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद में थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लें वीडियो। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक चावल का थैली, और उसका मैंने आधा हिस्सा ही काट लिया है, और इसी का इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगी चूड़ी बॉक्स। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में जब भी चावल या फिर कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो थैले में आती है, तो उस थैले का हम अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल अब अच्छे तरीके से करेंगे, एक बढ़िया सा चूड़ी बॉक्स बना के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान प्रोसेस से बताया है कि आप कैसे बना सकते हैं। और मैंने यहाँ सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया है इसको सिलने के लिए। अगर आपके पास में सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिल सकते हैं। बस इतनी सी अंतर होती है कि अगर हम सिलाई मशीन से सिलते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है।
सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए ये यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।